password. Okay, so now in today's session, and we're going to discuss about the Google site. We have discussed how to animate and how to transact your slides. And now it's time to discuss about the Google site, like how you can work on this application, this tool. Actually, this was a very important tool, we can say, or it's a very important application in our whole course, because normally मैंने जो है आपको कोर्स आउटलाइन में भी इस चीज को डिस्कस किया है, और ओरिएंटेशन सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि नॉर्मली आजकल जो जो भी जो है वो स्टूडेंट्स जो है फॉरेन जो है वो कॉलेजेस में या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, या कोई भी अगर एज एन एम्प्लॉयमेंट या काम करना चाहता है फॉरेन, सो दे यूज टू क्रिएट दी देयर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज, तो वो जो है अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं. दिस वाज एक्चुअली द टाइप ऑफ सीवी you can say, and the portfolios is not just for a man, their qualification, all that, but the people used to create portfolios of their pages as well, of their businesses as well. Like अगर आपका जो है जैसे कि हमारा कोर्स है टेक्नोलाइट्रेट, सो उसका जो हम एक अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो बनाना हो, सो वी गो टू क्रिएट फ्रॉम हियर. So first of all, we're going to start from a blank page, and then I'm going to tell you each and every feature of it. So then we're going to work on the our demo site. हमने एक पहले से तैयार करके रखा हुआ है एक पोर्टफोलियो, so we're going to display you for an example. So this how it will going to open, and आपको यहाँ पे इस तरह जो है जब if you're going to open the Google site, so you're going to receive this type of screen, and here is lots of option. यहाँ पे आप अपनी जो है creativity हर तरह से show कर सकते हैं. You have multiple options, you have vast features in this application. You can do whatever you want, you can insert whatever you want to insert. And first of all, I'm going to give this site, this Google site, a title. Like यहाँ पे जो है example के तौर पे जो है एक हम टाइटल देंगे like Technolitrate. I have given an examples Technolitrate. You can you give either you want to give any of the title you want to give. Okay, so यहाँ पे जो है अब यहाँ सबसे पहले इसको मैनेज करेंगे. फर्स्ट आई वांट टू मैनेज इट, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे होंगे. फर्स्ट इज टाइटल ऑप्शन. लाइक दिस इज माय टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, स्मॉल टेक्स्ट. तो यहाँ पे नॉर्मली ये टेक्स्ट के जो है वो फीचर्स हैं कि आपको इसको हेडिंग फॉन्ट में रखना है, सब हेडिंग फॉन्ट में रखना है, या स्मॉल टेक्स्ट में रखना है. तो आई एम गोइंग टू मार्क इट एज अ टाइटल बिकॉज इट्स माई टाइटल. उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स जो है यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे. यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉन्ट, यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉन्ट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. सो आई विल गो टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन लाइक कैलब्रिक. यूजुअली आई गोइंग टू वर्क ऑन दिस फॉन्ट. आपको भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं. And then we have a font size option. You can select any of the font you want to insert and make your text according to that font size. So यहाँ पे जो है एक टाइटल के लिए नॉर्मली बिग फॉन्ट यूज होता है. So I am just select the 30 font. I want this. Okay. So यहाँ पे जो है फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है. उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आते हैं. यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बोल्ड. यू कैन आइदर मेक योर टेक्स्ट बोल्ड एज वेल, इटैलिक एज वेल, and you have an option of underline as well. You can either change the text color as well. बहुत सारे text के colors भी हैं, आप उसमें से कोई सा भी जो है color भी choose कर सकते हैं, like orange or blue or any color you want to insert, so you can insert it. Okay, फिर यहाँ पे जो है ऑप्शन आता है लिंक का. इफ यू वांट टू इंसर्ट अ लिंक इन योर टाइटल, अगर आपको अपने जो है आप अगर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं और आपको अपने टाइटल में कोई लिंक इंसर्ट करना है, सो यू कैन इंसर्ट अ लिंक फ्रॉम हियर, एंड लाइक यू हैव टू पेस्ट द लिंक हियर, एंड दैट लिंक वुड बी इंसर्टेड ऑन योर title screen. So this how you're going to insert any link you want to insert, but I don't want to insert a link here. So यहाँ पे जो alignments भी you have an option of alignment as well. You want to shift your text to left as well, center, right. So ये सब जो है normal features हैं जो हर आपको application में usually you're going to get. So then you have an line and paragraph spacing option. Like आपको जो है lines के दरमियान कितने % का जो है वो you have to make a distance. So this how you have a distance option like 1.15, 1.25, 1.5 or double. So these all were the lines spacing you have to insert. Like अभी जो है Technolitrate I have mentioned a single text, but अगर मैं इसको जो है और इसकी जो है इसमें और डिटेलिंग अगर मैं ऐड करूं टाइटल के अंदर, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज टेक, वेट अ मिनट, टेक साइट कोर्स 2022. सो इस तरह जो है अब जो है मैंने जो है यहाँ पे अब मेरा जो हेडिंग है वो एक नहीं है. नाउ आई हैव अ
2 headings and now I can easily अब मैं यहाँ पे easily जो है line spacing insert कर सकता हूँ. Like I want lines 1.5 meters, so now you can see it's the distance between the 2 headings. Now it was 1.15 meter distance in between the Technolitrate and the tech site course 2022. तो इस तरह आप जो है अपने लाइंस के दरमियान इतने परसेंट के अकॉर्डिंग जो है आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं. यू कैन इंसर्ट डबल एज वेल, लाइक आपको यहाँ पे डबल डिस्टेंस भी आप मेंटेन कर सकते हैं. सो एज योर कन्वीनियंस यू कैन चूज एनी ऑफ द डिस्टेंस यू वांट टू इंसर्ट. उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रॉस एज वेल, लाइक आप इफ यू वांट स्ट्राइक थ्रू, सो अगर आपको उस चीज को ऐसा शो करना है इट वाज अ कटेड thing, so you can easily select this strike through option. So this was actually in Microsoft Word as well, and you can easily get it from everywhere. So these were some common features, some common things that you were going to be well aware of the Google site. So यहाँ पे जो है कुछ जो है वो बेसिक चीजें हैं. इसके अलावा जो है अगर हम हाई उसकी तरफ बढ़ें, so we have an option of change image. If you want to see bottom of this title, you can see that there's an option of change image. So you can insert any of the image you want to insert, and that image would be inserted as a form of background. यहाँ पे आपको black और gray shade का जो है आपको background जो है यहाँ पे आपको insert हो रहा है. मगर if I want to insert any image, so आप यहाँ पे अपनी image भी जो है आप कोई सी भी यहाँ पे image भी insert कर सकते हैं. Like if I want to insert an image of my Facebook page logo or channel art, so I'm going to insert it here Technolitrate. It was actually my logo and it will going to be like I am branding my electronic portfolio. So आप यहाँ पे कोई सी भी आप image insert कर सकते हैं. Okay, so now we're going to have an option of reset as well. Reset पे करेंगे तो of course your image will be resetted, and if you're going to select this header type, आपको यहाँ पे headers के बहुत सारे जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. Like you have a large banner as well, title only as well, and cover as well. Like if I'm going to select this large banner, so see now my header, like यहाँ पे जो है आपको टॉप पे header जो है शो हो रहा होगा. यहाँ पे आपको अपनी साइट का नेम मेंशन करना है. What is actually the site? ये साइट जो है मेरी टेक्नोलाइट्रेट, जो मेरा जो फेसबुक पेज है उसकी मैंने एग्जांपल ली है, तो उसका मैं यहाँ पे टाइटल मेंशन करता हूँ. आप यहाँ पे कोई भी टाइटल मेंशन कर सकते हैं. यू कैन ऐड अ लोगो एज वेल, आप यहाँ पे कोई भी लोगो भी ऐड कर सकते हैं. सी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अपलोड लोगो, सो आप यहाँ पे कोई सा भी लोगो भी ऐड कर सकते हैं. सो आई एम इंसर्टिंग दैट लोगो. सो यहाँ पे आपको लोगो इंसर्ट हो गया है. आप उस लोगो के ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, पर आई डोंट थिंक दैट आपको जो है यहाँ पे लोगो पे टेक्स्ट लिखने की कोई जरूरत है, बट लोगो इज जस्ट लाइक लोगो. सो आप यहाँ पे सिंपली अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ व्यूअर टूल. अब यहाँ पे आपको ये सब जो है वो सेटिंग्स में आता है, सो यू डोंट हैव टू मेक इट एनी चेंजेस इन दिस सेटिंग्स, वरना जो है वो सब कुछ जो है वो कुछ एरर्स आ सकते हैं. सो यहाँ पे जो है ये सिंपली सेटिंग्स हैं. सो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटिंग्स भी शोन हो रही है. You can see that the announcement banner, like the title banner, you can say that you can have the show. If you want to allow the show banner, so now the banner would be showing upward towards header के पास जो एक banner show हो रहा होगा, that will going to be tell you that it was your site or it was your project. तो normally लोग इसको यूज इसलिए करते हैं ताकि कि बहुत सारी जो है साइट्स होती हैं, तो कोई साइट्स मिस ना हो जाए या गुम ना हो जाए, तो इसलिए लोग यूजुअली जो है द पीपल यूज टू select this option. So I don't think that we need this option because it's not an important option you want to insert. Now you have a banner colors as well. The banner you would insert, you can insert any color of this banner as well. So यहाँ पे जो है आप यहाँ पे अनाउंसमेंट मेंटेन मेड कर सकते हैं. सो ये सब तो है नॉर्मली जो है इसकी जो है सेटिंग्स होती हैं. सो यू डोंट वांट टू change any of the setting from here. You just have to add your logo and that's it. Okay, so now आपको जो है logo insert हुआ होगा. See, if you're going to see that Technolitrate के जो side पे you can see it's a logo. So इस तरह आप यहाँ पे कोई सा भी अपना logo insert कर सकते हैं and you're going to get on your official Technolitrate ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो. सो यहाँ पे आपको इस तरह जो है अपना बैनर भी अपना जो है वो लोगो भी आप इजीली इसको ऐड कर सकते हैं. अदर थिंग इज दैट ये जो है आप इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि उसकी मूवमेंट जो है थोड़ी बदल दी जाए, बिकॉज ये इस वक्त बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं लग रहा है. सो आई एम गोइंग टू मूव दिस एरिया एंड आई वांट दिस टू बी केम डाउन. तो इस तरह जो है आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं. इसकी अलाइनमेंट में सेम कर लूँ. ओके,
So now this how you're going to select any you can change the position of your title, or you want a title in a header form. So आप इसको header form में भी ला सकते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि एक तरह से ऊपर की फॉर्म में, अपर फॉर्म में हो, तो आप इसको अपर फॉर्म में भी ला सकते हैं. सो इस तरह जो है इसको टाइटल को भी बहुत सारी जो है अपने फीचर्स के थ्रू इसको एडिट कर सकते हैं, कलर वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. तो कॉमन सी चीज है. Okay, उसके अलावा अदर थिंग इज दैट यू कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ दिस रिमूव रीएडेबिलिटी एडजस्टमेंट. सो इस तरह जो है अगर आप इसको रिमूव करते हैं, तो सी योर you're going to remove it. So the adjustment which you have made on your electronic portfolios, like अभी तो मैंने सिर्फ टाइटल पे काम कर रहे हैं. So अगर आप जो है और फर्दर अगर आप काम करते हैं, और if you will going to make it ऑफ, सो आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट, यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट एडजस्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट या अपर टू डाउनवर्ड्स, तो वो सब जो है वो वापस अपनी जगह पे ले आएगा, एंड योर एडजस्टमेंट वुड नॉट बी हैपेंस इन योर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो. उसके अलावा हमारे पास जो है एंकर इमेज ऑप्शन है. If you will going to have an anchor image, so that's mean you have to insert your image where you want to, like आपकी जो image, आपको जो background में जो आपने image select की है, जो मैंने यहाँ पे example के तौर पे टेक्नोलाइट्रेट का जो बैनर जो है मैंने यहाँ लगाया है, सो आप उसकी जो है इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको अपर चाहिए, आपको सेंटर में चाहिए, डाउनवर्ड्स, तो इस तरह जो है आप इसकी जो है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं. ओके, अदर थिंग इज दैट इसके ये एक तरह से जो है हम अभी तक टाइटल के ऊपर काम कर रहे हैं, और टाइटल के अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स है दैट यू हैव टू बी टुक अवेल इन दिस इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो. ये कोई इजी नहीं है, ये बहुत वास्ट एरिया है, बिकॉज यहाँ आपको साइट पे मेंशन होगा, यहाँ देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू इंसर्ट, सो यू गोइंग टू इंसर्ट इट हियर. ओके, आई रिसीव अ मैसेज इट. ओके, so now we're going to have an option like आप जो है यहाँ पे but first wait a second, I want it to be muted. Just wait a second please. Okay, so now we are resuming a session, and now we're going to move towards this area. Like अब यहाँ पे आपको different चीजें mention हो रही होंगी. Text box आप insert कर सकते हैं. Here you will going to receive those things which you can insert in your electronic portfolio, in your Google site you can say as well. आपको यहाँ बहुत सारी जो है different चीजें यहाँ पे like text box भी हैं, और आपके पास जो है वो you have the text box as well, you have images as well, like you have embedded. So ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो हम टेक्स्ट बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं. like आपको यहाँ पे एक तरह से जो गूगल साइट है, ये एक तरह से पेजेस फॉर्म में होता है. like you will going to start from first to last, you're going to display these all things from a sequence form. like आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो सीक्वेंस फॉर्म में आपको यहाँ पे हर चीज डिस्प्ले होगी. अब जो है हमने यहाँ टाइटल्स जो है वो क्रिएट कर लिया. टाइटल जो है इसको हम एक तरह से टाइटल पेज कह सकते हैं. टाइटल पेज क्रिएट कर लिया. नाउ वी गो टू क्रिएट the further option, and now I have added a text box. अब यहाँ पे आप text box में आप कुछ भी mention कर सकते हैं. आप अपना जो है जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, the thing you are making on any project, on any thing you are making, so you're going to you will going to write it here. आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ टाइटल बॉक्स में आप लिख सकते हैं. and if you don't have use of this title box here, so you will remove it as well. so यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे for an example, like this is a computer कोर्स. मैंने यहाँ कंप्यूटर कोर्स के नाम से हेडिंग मेंशन कर ली है, और जो है यहाँ पे इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने कोर्स यहाँ पे इसकी मैं जो हूँ वो अपना साइज भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ. आई विल गोइंग टू सेलेक्ट इट इन अ लार्ज फॉर्म एज वेल, इन अ स्मॉल फॉर्म एज वेल. यहाँ पे अच्छा, इसको जो है मुझे एक तरह से नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर करना है, या ये टाइटल हेडिंग, तो ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं. एनी हेडिंग you can make it as a heading as well, you can make as a title as well, subheading as well. So any thing you want to make, so you can make it. like I want this as a subheading. Let's take an example of subheading. And you have an option of fonts. तो वापस से आपको यहाँ fonts के different options you will going to see here. Fonts option as well, you're going to see this font size as well. You can adjust the size of the font as well. आप यहाँ पे font के size भी adjust कर सकते हैं, bold, italic, underline. So these were some previous features that we have discussed already, like underline and then text color.
सो आप इस तरह जो है अपने टेक्स्ट बॉक्स को जो भी आपने उसमें टेक्स्ट इंसर्ट किया है उसको किसी कहीं पर भी जो है उसको आप पोजीशंस भी उसकी आप चेंज कर सकते हैं। उसकी पोजीशन चेंज करने के साथ साथ आप उसको जो है एक तरह से अपने जो पोर्टफोलियो के ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ टाइटल, इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट, सब हेडिंग। तो ये सब चीजें जो है इसके अंडर आ जाती हैं। सो एंड देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इमेज। लाइक नॉर्मली ये होता है कि आप जो है वो जो भी इमेज आप इंसर्ट करते हैं, यू गोइंग टू अपलोड फ्रॉम योर ड्राइव और यू कैन ऐड इट फ्रॉम योर वेबसाइट एज वेल। आप ब्राउज सर्चिंग करके भी वहां से इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू अपलोड एन इमेज फ्रॉम माई कंप्यूटर। सो यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही इमेज जो है यूज करता हूँ और यहाँ मैंने इमेज भी इंसर्ट कर ली। इस तरह जो है आप इमेज भी अपनी गूगल साइट पे यू कैन इंसर्ट इट वेयर यू वांट टू इंसर्ट। एंड देन इट हैव वास्ट फीचर्स लाइक यू कैन क्रॉप इट एज वेल। आप यहाँ पे जो है इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इसको यू कैन मेक इट जूम इन एज वेल, जूम आउट एज वेल। आपको यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। यू कैन मेक इट अनक्रॉप एज वेल। आप इसको अनक्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ insert link. If you want to insert a link, like अगर आपको उस image को describe करने के लिए you need any link to describe this image, so you can insert any link as well. Other than this, you have an option of replace image as well. आप इसमें से कोई भी image जो है वो replace कर सकते हैं to another image. You can add an alternate text as well. Like this, you can add, for example, description के तौर पे like I want to explain this picture to you, so I am going to insert an alternative text. आप इस तरह किसी भी image के लिए आप alternative text आप insert कर सकते हैं. So it's a logo. So ये एक मैंने एक line mention की है. So आप उसको apply कर सकते हैं and then it will be like आपको यहाँ पे apply करके आप एक second आप इसको apply कर सकते हैं. This is a decorative text. If you want to be the decorative form, so आप इसको decorative form में भी कर सकते हैं. Okay, so यहाँ पे मैं लिखता हूँ it's a लोगो. आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और इस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन मेंशन हो चुकी है और यहाँ पे जो है ये यूजली व्यूअर्स के सामने आपको इजीली जो व्यूअर्स तो देखेंगे, देख रहे हैं, मैं तो क्रिएटर हूँ, so the person who is viewing this site, so you're going to receive in a top form as well or a bottom form as well written that it's a logo. तो description जो है usually viewers को show होती है images की. And you have an option of add caption as well. आप इसमें caption भी add कर सकते हैं. See how this for adding a caption you're going to have another box, another text box occurs and you can add any caption you want to add, so you can add it. And then you have an option of normal text or तो these all are the previous option that we have discussed. तो यहाँ पे आपको फिर से जो है वो previous वाले जो options हैं like font size, font styles and then text form, bold, italic, underline. So यहाँ पे वो सारे जो हैं different चीजें जो हैं फीचर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो फिर से वो फीचर्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस कैप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू ऐड एनी कैप्शन ऑफ दिस इमेज. सो यहाँ पे एक कैप्शन जो है ऐड कर लेते हैं. लोगो, सी सिंपली आई राइट अ लोगो. सो अब वो लोगो जो मैंने मेंशन किया है, सो नाउ इट विल टर्न इन अ कैप्शन फॉर्म and in a caption form and now it will going to be appear on your image. So इस तरह जो है आप इमेज को जो है वो आप उस इमेज को के इमेज के लिए आप कोई कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं और कोई भी आप चाहे तो कैप्शन जितना भी लंबा हो सकता है एंड यू हैव डिफरेंट ऑप्शन ऑफ एडिटिंग योर कैप्शन एज वेल. सो नॉर्मली आप जो है अपने गूगल साइट के ऊपर जो है कैप्शंस भी अपनी इमेज के लिए ऐड कर सकते हैं. सो दीज ऑल वर दी फीचर्स. एक्चुअली मैं ये फीचर जो है मैं आपको इस तरह डिस्क्राइब कर रहा हूँ वन बाय वन, पर इस सबको आपको अप्लाई कैसे करना है यू विल गोइंग टू थिंक अबाउट इट एंड यू विल गोइंग टू शो योर क्रिएटिविटी by creating any electronic portfolio. You can use any of the technology gadget, like आप किसी कंप्यूटर कोई भी आप ले लें, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, किसी भी आप गैजेट के ऊपर ले लें या आप अपने ऊपर ही ले लें. लाइक यू कैन मेक योर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज ऑन योर सेल्फ. यू कैन ऐड anything you want to add, like your qualifications, your experiences, your study, your school, your hobbies, your activities. So these all things you can add in your electronic portfolio. So इसके अलावा जो है हमारे पास ये साइट पे you can have an option of delete section as well. You can delete this caption box as well. You can copy, like duplicate this section as well. You can change the color of this section as well. Like यहाँ पे आपको styles mention होंगे, style 1, style 2, style 3. So style 3 was like that कि you're going to have a long bar and in that bar you're going to see like इस आपको इस तरह जो है show हो रहा होगा style 3 में. If I'm going to select style 2, so style 2 would be like you will have a gray box
and your image and your caption was inserted in that bar. So ये जो है different different styles हैं. Style one जो है वो normal style जो मैं पहले से apply किया था. So if you want any image to be inserted in your box, so आप यहाँ से कोई भी image भी insert कर सकते हैं यहाँ पे. See now the image was inserted in your bar in your text box. तो इस तरह जो है आप अपनी image भी insert कर सकते हैं और image का background भी change कर सकते हैं. मैंने background में जो है एक image लगाई है. आप कोई color भी ले सकते हैं. आप कोई भी जो है background use कर सकते हैं. ओके इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है एम्बेडेड का और ड्राइव का. अच्छा हमारी क्लास जो है आवर क्लास वी गोइंग टू एंड ऑन 1 minute. So after 10 minutes or after 10 minutes break we're going to join with the previous link which I've shared. We're going to join our class and I'm stopping our class here and it's now 3:34 and you're going to join me on 3:44, okay, with the previous link which I've shared already in the group. So yeah, then we're going to resume our session from here. Okay, till then I'm going to pause the session. Okay. Okay, so we are resuming our session and we have discussed like how we can create this text box, this images, and then now we're going to discuss about how we can add this embedded. What is this? I'm going to show you like this is actually the you have to insert any URL if you want to insert any link of the website. Like आपको अपनी जो है वो portfolio में अपने जो है वो site के ऊपर if you want to add any link of your website, any web page, or any link you want to insert, like any Facebook page link, any YouTube video link, any link you want to insert. So you can insert from here, and then it will going to be show on your Google site. Other than this, you have an embedded course. This was some programming things like HTML or programming जो topics and which we are discussing that topics in soon inshallah. So this was the things that was related with programming. Like यहाँ पे आप जो है कोई code नॉर्मली जो है HTML के या फिर जो है वो Python के और these were और JavaScript भी जो है वो बहुत important है. So these were some languages that have many different codes. Like you were going to work on that codes, and that codes was normally you can say it's a form of HTML, hypertext markup language. So you will going to insert any code here, and then you can insert it on your Google site. So इसका ये मतलब है कि आप अपने portfolio में you can add any programming language or any programming code as well. But ये जो feature है, when we're going to discuss about the programming, and then we're going to discuss about like how we can add this embedded code on our electronic portfolio. But till then, we're going to insert this URL. Like यहाँ पे आप कोई भी link जो है वो insert कर सकते हैं, and then you're going to insert the link on your Google site. Okay, इसके अलावा you have an option of Google Drive. But before going to Google Drive, if any participants have any question regarding any of the features, so they can ask, feel free to ask. We're going to apply you the recordings after this session, and the recording will be uploaded on Google Drive as well. Only this session, this 2 hour session recording would be uploaded in the Google Drive, and then it will going to be uploaded on YouTube in the parts form, like parts मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके जो है यूट्यूब पे भी अपलोड की जाएगी और ये गूगल ड्राइव पे भी आ जाएगी. So you're going to see the recordings there as well. But if you have any question, so you can ask here as well. I'm going to answer your query, and I'm going to resolve your query in the class as well. So now we're going to discuss about the drive. Like इससे क्या होता है, if you're going to search this Google Drive, you have an option of your drive will going to appear like your drive or the things which were shared to you और recent activities. तो यहाँ पे आपको different different जो है वो चीजें जो है यहाँ पे open हो सकती हैं, and you can add anything you want to add from your Google Drive. चाहे वो कोई Google Documents हो, चाहे वो कोई भी वीडियो हो जो आपके Google Drive में हो, या चाहे वो कोई आपकी presentation हो, you can add any of the thing in this electronic portfolio. एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक PDF जो कि किसी हमारे जो है कोर्स के स्टूडेंट ने जो है ये अपना असाइनमेंट जो है वो बना के दिया था. He have made a brochure, if I'm not forgetting it, it's a brochure and he have made it for us. So I'm going to take an example of this activity, like it's in a PDF form, and you can add this in your electronic portfolio as well. Like आप जो है इसको add कर सकते हैं. See, I've double clicked on this PDF, and your PDF would be add on your electronic portfolio. इसका ये मतलब है कि आप अपने जो है वो साइट एक तरह से आप इसमें अपनी PDFs ऐड कर सकते हैं,
कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो आपको जो है वो इजीली एडेबल है आपके गूगल साइट के ऊपर. सी दिस पीडीएफ वाज इंसर्टेड इन दिस गूगल साइट एंड यू कैन ऐड इट एज वेल. लाइक यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा ओपन अ न्यू टैब. So if you could open a new tab, so a new tab would going to be open, and that PDF would be easily locatable to your uh, viewer. So इस तरह जो है, अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने एक न्यू टैब ओपन किया है. If you see your screen, what application you are using. I am actually using the Google site. It's a Google application. ये easily available है. ये usually जो है वो आपको वेब साइट पे मिलेगी. ये मैंने इसकी जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन सेलेक्ट चूज अभी तक नहीं किया. मतलब मोबाइल एप्लीकेशन इसकी मैंने अभी इसके बारे में नहीं देखा है, मगर ये यूजली आपको जो है वो इजिली कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप पे अगर आप एक्टिवेट हैं तो वहां से आपको इंटरनेट के थ्रू आप इजिली सर्च करिए गूगल साइट. सो इट विल गोइंग टू बी इजिली activate in your computers, laptops, everywhere it can open. But mobile users के बारे में नहीं पता. But अभी इस session के बाद I want to check it if it is available for mobile users. So I'm going to share the link of this application to WhatsApp group. Okay, this is actually a Google site. Its name is Google site. Okay, so we are talking about this PDF. Like अगर आप कोई भी जो है वो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, so you can easily open in a new tab as well. Usually जो है ये रेफरेंसेस के तौर पे काम आ सकता है. Like आपको कोई रेफरेंस देना है, या आपको अगर आपने कोई चीज क्रिएट की एंड यू वांट इट टू बी अटैच टू योर पोर्टफोलियो, सो आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एंड द यूजर विल गोइंग टू ओपन इट इन अ न्यू टैब. लाइक उसके पास वो इजिली एक्टिवेट हो सकता है, चाहे वो मोबाइल यूजर हो, चाहे वो पीसी पे हो या लैपटॉप पे हो, कहीं पर भी हो. It can activate that file. It's in a PDF form, it's in a Google document, it's a PowerPoint presentation, anything you have inserted, it can easily activatable in your device or in your PCs. Okay, इस तरह आप यहाँ पे कोई सी भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी या अपनी कोई भी जो है आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है. सो यू कैन add it in your electronic portfolio. Other than this, you have an option of color as well. Like आप यहाँ पे फिर से वही आपके styles option है. You have an styles option like style 1, style 2, style 3. आप कोई से भी style choose कर सकते हैं for making your document, for making your thing more attractive. इसके अलावा आपके पास ऑप्शन डुप्लीकेट सेशन. इसको अगर आप करेंगे तो you're going to have another section, like बिल्कुल डुप्लीकेट हो जाएगा इससे, और आप उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं. सो दीज वर सम कॉमन थिंग्स दैट यू कैन इंसर्टेड. मगर ये जो एक फीचर है लाइक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज बनाने में, और फिर उसमें जो है वो पीडीएफ्स, और यू कैन इंसर्ट गूगल डॉक्यूमेंट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड दैट विल गोइंग टू मेक योर वर्क इन वन प्लेस. आप अपना जो जितना भी आपने काम बनाया, जितने भी असाइनमेंट्स बनाए हैं, जो भी आपने जो है चीजें क्रिएट की है, इट विल गोइंग टू बी सम अप इन वन एरिया. सो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है for you all. So you have to create your electronic portfolios that will going to make your skills, your creativity more sharpened. And this is a very biggest thing. Like बहुत कम एज में और बहुत कम एक्सपीरियंस में इस तरह चीज क्रिएट करना और बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी बात है ये. So I have also created my electronic portfolio. I'm going to show you after this tutorial, after this session. So I'm going to share with you. उसके अलावा जो है हमारे पास options है यहाँ पे current blocks के. This was actually the designs. You can say that we have a different blocks. Like आप इसमें से कोई भी block choose कर सकते हैं. You can choose either this option, like यहाँ पे आपको option नजर आ रहा होगा. So see, now you can add anything फ्रॉम हेयर. लाइक अब आप यहाँ पे कोई से भी जो है कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, आपको यूट्यूब वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कोई कैलेंडर आपको इंसर्ट करना है, मैप इंसर्ट करना है. सो दीज वर द थिंग्स यू कैन इंसर्ट हेयर दैट विल गोइंग टू बी लिंक्ड विद योर पोर्टफोलियो. तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई इमेज इंसर्ट करते हैं, चले मैं इमेज की एग्जांपल ले लेता हूँ. यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर से एक इमेज इंसर्ट की और मुझे अब इस इमेज के बारे में कुछ चीज डिस्क्राइब करनी है. दैट आई थिंक अगर मैं ये चीज करूंगा, सो मुझे अगर लगता है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, सो दिस हाउ आई कैन ऐड एनी इमेज एंड आई कैन ऐड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इमेज एज वेल. कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक दिस इज माई लोगो ऑफ माई कोर्स टेक्नोलाइट्रेट. सो इस तरह जो है आपके पास ऑप्शन होगा. तो इस आप जो है यहाँ पे इजीली यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो. लाइक मैं आपको एक सेकंड आपको जो है कोई आपको वीडियो जो है वो इंसर्ट करके सिलेक्ट करके दिखाते हैं. सो अभी जो ये सेक्शन जो है मैं डिलीट करता हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस
ऑप्शन लाइक सेकंड करंट ब्लॉक जो है, इसके अंदर आपको दो एरियाज मिलेंगे. यू कैन ऐड टू थिंग्स हियर. लाइक फर्स्ट के ऊपर जो है मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो इंसर्ट करके दिखाता हूँ. लाइक सी हाउ यू कैन इंसर्ट योर वीडियो इन योर पोर्टफोलियो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक यहाँ पे आपको अपनी वीडियो का कोई यूआरएल आप सिलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं, या अपनी वीडियो का टाइटल सर्च कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू सर्चिंग हेयर टेक्नोलाइट्रेट. ओके, यहाँ पे जो है मैंने एक टेक्नोलाइट्रेट जो है अपने चैनल का नाम सर्च किया है. And then you can see there are many videos. You can see I can add any of the video I want to add. So इस तरह ये होगा कि उस वीडियो का रेफरेंस एक तरह से मेरे पोर्टफोलियो में नजर आएगा. So I'm going to search this this option. Like मेरा जो ओरिएंटेशन सेशन है, मैं इसको एक तरह से इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ. So see this how your so this how you're going to insert your YouTube video as well. एक तरह से आप इसको समझे कि ये वेबसाइट है. नॉर्मली ये होता है वेबसाइट के ऊपर कि वहाँ पे वीडियोस भी शो हो रही होती है, वहाँ पे आपको कोई अगर आपको वहाँ पे राब्ता करना है, सो इट विल गिव यू दी कॉन्टेक्ट नंबर एज वेल. सो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि यहाँ पे आप एवरीथिंग, कोई भी चीज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो है मैंने एक वीडियो जो है वो इंसर्ट की है. अगर ये जो ये वीडियो नॉर्मली जो है एक नए टैब पे खुलेंगी, अगर आप इसको पीसी पे खोल रहे हैं या लैपटॉप पे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, सो इट विल गोइंग टू बी ओपन इन अ न्यू टैब फॉर्म. सो मगर इसको इंसर्ट करने का मकसद ये है दैट आई कैन शो दैट हाउ दैट व्हाट आई हैव क्रिएटेड और व्हाट आई हैव मेड. यहाँ पे मैं इसको एक टाइटल भी दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी लाइक ओरिएंटेशन सेशन. तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो का ओरिएंटेशन सेशन का जो है नाम दे दिया है. इस तरह मेरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो में और ज्यादा ये जो है और अट्रैक्टिव लगेगा जो भी व्यूअर्स होंगे. सो इस तरह आप कोई भी वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं. अदर देन दिस यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लाइक आप यहाँ पे आपको ऑप्शन है यहाँ पे आप कोई भी जो है वो कैलेंडर कैलेंडर या मैप भी इंसर्ट कर सकते हैं. नॉर्मली ये जो है यूजली द पीपल यूज टू ऐड द मैप के जो जिन लोगों की जो है फिजिकल लोकेशंस होती हैं लाइक कंपनीज और दे हैव एन आउटलेट्स और कोई भी इस तरह की जो है वो कमर्शियल प्लेस होती है उनकी, तो वो नॉर्मली उसका रास्ता यानी कि उनका जो लोकेशन है वो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियोज पे, ताकि लोग जो है इजीली वहाँ पे पहुंच सकें. सो आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट एनी कैलेंडर. कैलेंडर का नॉर्मली ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी कैलेंडर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. सी आई एम गोइंग टू इंसर्टिंग एनी कैलेंडर. लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है, मैं अपना ही जो है गूगल क्लासरूम का जो है वो कैलेंडर आपको इंसर्ट करके शो करता हूँ. सी आपको जो है यहाँ पे अभी यू गोइंग टू सी द कैलेंडर, यू गोइंग टू इंसर्ट द कैलेंडर ऑन दिस ऑप्शन. अभी जो है यहाँ पे एक कैलेंडर जो है वो इंसर्ट हुआ है. सो यू गोइंग टू सी इन दिस फॉर्म बिकॉज जो है वो कैलेंडर इस वक्त जो है इतना ज़्यादा अपडेट नहीं है. सो इफ यू हैव क्रिएटेड एनी गूगल कैलेंडर, अगर आपने कोई कैलेंडर बनाया है, अगर आपने कोई भी जो है वो डेट उस पर मार्क किए हैं, कोई भी आप अगर आप यूज करते हैं गूगल कैलेंडर. नॉर्मली लोग जो है कैलेंडर्स यूज नहीं करते उसके ऊपर, या फिर जो कोर्सेज करा रहे होते हैं, या नॉर्मली द टीचर्स यूज टू use these features, so they used to make the calendar and you can add your calendar in your portfolios as well. यहाँ पे आप उसको ऐड भी उसका नाम भी है, लाइक आप उसको एडिट भी कर सकते हैं. यू आर गोइंग टू गिव अ नेम ऑफ दिस कैलेंडर एज वेल. लाइक आई एम जस्ट गिविंग इट अ नेम कैलेंडर. सो इस तरह आप यहाँ पे कोई सा भी जो है वो यहाँ पे आप नेम जो है वो दे सकते हैं, कैलेंडर या जो भी हो. ओके, फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो स्मॉल टेक्स्ट का भी ऑप्शन है. यू गोइंग टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट टाइटल एज वेल. यहाँ पे बोथ बॉक्सेस हैव एन ऑप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन. आप यहाँ पे उस टाइटल की उस ऑब्जेक्ट या उस चीज की जो आप इंसर्ट किया उसके आप डिस्क्रिप्शन ही मेंशन कर सकते हैं. सो अदर देन दिस यू हैव एन अदर ऑप्शंस एज वेल करंट ब्लॉक्स के. यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन है. सी this was another section I have created. So in this section I got the three boxes. Like I can insert three things if I want to insert. Like first I'm going to insert any image, और कोई भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. आप यहाँ पे कोई भी जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज जो आप अपनी ड्राइव से सिलेक्ट करना चाहें. सी अभी जो है यहाँ पे मैं आपको आई एम गोइंग टू इंसर्टिंग एनी वीडियो. लाइक सी यहाँ पे एक वीडियो जो है मेरे पास गूगल ड्राइव में एक है. सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट दैट वीडियो इन दिस ऑप्शन. सी दैट वीडियो विल गोइंग टू बी इंसर्टेड इन दी माय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो. तो इस तरह आप जो है कोई वीडियो, चाहे वो कोई यूट्यूब वीडियो हो, चाहे वो कोई आपकी गूगल ड्राइव में सेव करी हुई वीडियो, या चाहे वो आपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड की हुई वीडियो हो, या कोई भी ऐसी चीज लाइक पीडीएफ वॉट एवर
यू कैन इंसर्ट इन योर पोर्टफोलियो। कोई भी चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो में जो आपने खुद क्रिएट की हो। तो इस तरह जो है आप वीडियोस वगैरह, इमेजेस, ये सब नॉर्मल सी चीजें जो आप इजिली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव में से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। लाइक अभी जो है मैं आपको डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके दिखाता हूँ। लाइक सी, दिस वाज एक्चुअली द पीडीएफ। लाइक ये एक पीडीएफ है, और ये जो है एक पीडीएफ है, तो मैं आई कैन इंसर्ट एनी पीडीएफ ऑफ एनी थिंग आई वांट टू इंसर्ट, सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट दैट पीडीएफ एज वेल इन माय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो। तो इस तरह ये एक तरह से बताने का मकसद ये है कि यू कैन ऐड एनीथिंग यू वांट टू ऐड। आप उसमें से कोई सी भी जो है वो चीज आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 सेक्शंस बना के दिखाया था। फर्स्ट सेक्शन आई हैव इंसर्टेड अ पीडीएफ, in second session I have inserted a video and a calendar, and then I have inserted that picture, video and this pdf. So इस तरह जो है आप अपने जो है वो क्रिएटिविटी, आपने जो चीजें क्रिएट की हैं, यू कैन पेस्ट योर क्रिएशन ऑन योर पोर्टफोलियो। एंड नाउ व्हेन अच्छा आप सपोज करें यू हैव क्रिएटेड योर साइट, and now you have to publish your site to any of the person you want to send. like आपको उस अपना काम डिस्प्ले करना है। नॉर्मली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में, या नॉर्मली बहुत बड़े बड़े जो है वो ब्रांडेड एरियाज पे जो है वहां पे नॉर्मली इसका काम होता है। लोग जो है वो आपके पोर्टफोलियोज चेक करते हैं, अदर देन सीवीज रेज्यूम्स के अंदर नॉर्मली आप जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में आपकी जितनी भी चीजें वो मेंशन होती है। ज्यादा से ज्यादा भी आप उसमें कोई एलिमेंट यूज कर सकते हैं, या आप कोई एसेट, कोई भी आप चीज यूज कर सकते हैं, आप डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, मगर आप इस तरह वीडियोस और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वो आप इस तरह अपने पोर्टफोलियोज पे पेस्ट नहीं कर सकते। सो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है दैट यू विल गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस एप्लीकेशन व्हिच इज गूगल साइट, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप इन आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सेशंस। अच्छा, उसके अलावा अब बढ़ते हैं अब अपने डिफरेंट जो है वो फीचर्स की तरफ। लाइक कोलैप्सिबल ग्रुप। अब व्हाट इज दिस? सी, यहाँ पे अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सो यू विल गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ text box in which you can add your text, and you will going to have an option of sub heading as well. यहाँ पे आप किसी भी चीज को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी टाइटल। और इसका ये कोलैप्सिबल ग्रुप, इसको टर्म को मेंशन करने का मकसद ये है कि इसके अंदर हेडिंग के साथ साथ आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन ही मेंशन कर सकते हैं। नॉर्मली जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उसके अंदर से आप हेडिंग मेंशन कर सकते हैं, पर अगर आप ये कोलैप्सिबल ग्रुप ये चूज करते हैं, सो यू विल गोइंग टू हैव एन ऑप्शन ऑफ द टेक्स्ट एज वेल एंड द ऑप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो ये भी आप अपने जो है वो पोर्टफोलियोज में यूज कर सकते हैं। एंड देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ these things like heading, text वगैरह, और फिर आपके पास font के ऑप्शन है, फिर you have an option of font size. So these all basics option you have here. And then you have an option of delete section, duplicate that section, and you have an option of section styles as well. So ये सब तो वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं. So you can add any of the text, and you can add that description as well with the help of this collapsible group. उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट दिस टू बी रिमूव्ड ताकि मैं आपको दिखा सकूं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, सी, नाउ यू विल गोइंग टू गेट द टेबल ऑफ कंटेंट। अब जो है हमने इस वक्त 3 चीजें क्रिएट की हैं। फर्स्ट इस कंप्यूटर कोर्स के नाम से हमने एक टाइटल पेज इंसर्ट किया है। देन वी हैव मेड अ सेक्शन दैट हैव अ पीडीएफ। लाइक यहाँ पे आपको पीडीएफ शो हो रही होगी। उसके बाद हमने तीसरा सेक्शन जो है वो क्रिएट किया है, उसमें बस हमारे पास यूट्यूब वीडियो है और कैलेंडर है। उसके उसके बाद जो है हमने हमने फिर जो है हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये है कि कोई भी व्यूअर आपका जो है वो इफ ही विल गोइंग टू ओपन योर पोर्टफोलियो, सो ही विल गोइंग टू गेट दिस 3 ऑप्शंस लाइक कंप्यूटर कोर्स, orientation session, and calendar. If you want to see your orientation session, suppose, so he will go to click on the orientation session, and automatically he will going to get the section of orientation session. He don't have to scroll down and find that section, so उसको automatically मिल जाएगा। so normally ये होता है कि अगर आपको CV क्रिएट कर रहे हैं, so आप टाइटल देते हैं CV को, माई क्वालिफिकेशंस, माई हॉबीज, माई एजुकेशन। so इस तरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और एक टेबल कंटेंट बना सकते हैं। इसके अंदर आप इजीली जो भी व्यूअर होगा, जो भी जिसको भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, सो ही डोंट हैव टू वेस्ट हिज टाइम इन सर्चिंग योर थिंग्स। ही जस्ट हैव टू क्लिक ऑन योर टॉपिक, योर हेडिंग, and he will going to be arrived on that section.
उसको अगर आपका क्वालिफिकेशन चेक करनी है, सो यू विल गो टू इंसर्ट दैट ऑप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन। जैसे कि मैंने कंप्यूटर कोर्स दिया है, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो अब आप लोगों को पता है आप इसको किस तरह इसको क्रिएट करते हैं। ओके, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हाइड एज वेल। इफ यू वांट सेक्शन टू बी हाइडेड फ्रॉम द पब्लिक, सो यू कैन easily hide that option। अब जो है आपको जो है अब आप जिसके सामने प्रेजेंट करेंगे, सो ही विल नॉट गेट दिस ऑप्शन ऑफ ओरिएंटेशन सेशन, क्योंकि ये जो है मैंने हाइड कर दिया है। सो ही विल नॉट, he can't see this option of orientation session। If I will going to make it again show, so you're going to see that orientation session area। ओके, सो इस तरह जो है आप टेबल कंटेंट्स बना सकते हैं। आपने जो भी कंटेंट्स बनाए उसको आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, we have a question like, can we add transitions to the text here, because I have some people add transition to text in the portfolio। yes transitions वगैरह ये सब अभी आगे है, क्योंकि अभी जो है वो स्टार्ट है। we have the transition option, we going to discuss that as well। yes, you can add a transitions as well। यहाँ पे अभी डिफरेंट जो है, अभी हम जो है यहाँ पे डिजाइन और थीम्स की तरफ तो भी गए नहीं है, वो उसके अंदर तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। अभी तो हम यहाँ वो चीज डिस्कस करें that we get inserted in your portfolios। okay, we have a transition option, we will discuss that as well। okay, then we have an option of image crossal। उसके इसको अगर हम यूज करते हैं, so you can add any of the image। see like मैं यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ, you can insert any image and you will going to have two image। मैं यहाँ पे अगर दो इमेज जो है इंसर्ट करता हूँ, सी अब मैं यहाँ पे टू इमेज इंसर्ट किए एंड सी हाउ दैट इमेज वुड बी सीन हेयर। उसके अब जो है यहाँ पे जो इमेज जो है, इसको अगर हम सेलेक्ट करें फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे इमेज जो है वो डिस्प्ले होगी। मगर इमेज जो किस तरह डिस्प्ले होगी, अगर आपको एक इमेज के अंदर ही दूसरी इमेज शो करनी है, लाइक यूजली जो है ये व्यूअर्स के लिए है कि अभी यहाँ पे आपको दो डॉट्स नजर आ रहे होंगे। सो आप जो है एक ही इमेज के अंदर दूसरी इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। यू विल गोइंग टू स्वैप लेफ्ट और यू गोइंग टू स्वैप राइट, यू गोइंग टू चेंज दैट इमेज। यू हैव अ सेटिंग ऑप्शन एज वेल। आप यहाँ पे जो है इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और कैप्शन यू हैव टू इंसर्ट। लाइक जस्ट लाइक टेक्स एन एग्जांपल लाइक टेक। सो यहाँ पे मैंने दे दिया एक कैप्शन डिस्क्रिप्शन सा दे दिया है वो, और इसको मैंने कर दिया। सो नाउ यू गोइंग टू हैव एन ऑप्शन ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन एज वेल। इसमें नॉर्मली ये होता है लोग आपकी जो जो पिक्चर जो आप इंसर्ट किए, यू विल हैव इंसर्ट वन पिक्चर इन अ वन सेक्शन, यू हैव इंसर्ट टू पिक्चर्स। सो इस तरह आप जो है अपनी दो पिक्चर्स को भी आप एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। okay, you have an option of buttons as well, like how you're going to work on this option। see if you want to insert any like see if you want to insert any Facebook page link, let's take an example। so you will going to insert that Facebook page link। अच्छा, अब जो है और यहाँ पे आप जो है वो लिंक पेस्ट कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई भी जो है लिंक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है www डॉट कोई भी हम जो है वो एड्रेस करें, लाइक सी अब यहाँ पे मैंने लिंक जनरेट किया, इंसर्ट करते हैं। सी नाउ यू गोइंग टू हैव अ बटन, लाइक अब आपको एक बटन फॉर्म में फेसबुक पेज लिंक के बटन शो हो रहा है। तो इस पे जाके व्यूअर्स जो है वो इजीली आपका फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, वो जाके चेक कर सकते हैं कि आपने वहां पे क्या चीज क्रिएट की है। तो इस तरह आप अपना कोई भी जो है वो प्रोजेक्ट, कोई भी आपने कोई सोशली आपने कोई चीज क्रिएट की है, यू हैव क्रिएटेड एनी ग्रुप, एनी पेज, एनी वेबसाइट or anything you have created, so you can share the link as well in the form of button। अच्छा, उसके अलावा आपके पास जब डिफरेंट ऑप्शन है, आपका आउटलाइंस का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं एंड यू हैव अ डिफरेंट फ्रॉम लाइक आउटलाइन फिल्ड। सो दीज वर सम ऑप्शंस, यू कैन चेंज इट इन योर बटन। उसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का या कोई सा भी जो है भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसका आप यहाँ पे बटन लोकेट कर सकते हैं। डिवाइडर, व्हाट इज डिवाइडर? by inserting that divider you have inserted a line, like इस तरह आपको यह शो कर सकते हैं कि जो है वो एक पेज यहाँ एंड हो चुका है and now you are talking about a different thing। so if you want to show two things, like अगर मिक्स अप ना हो और आप दो अलग अलग चीजों में बात कर रहे हैं, so by adding a divider you can make that thing separate with each other। this is a, you can say, a line that divides two things in between them। तो यहाँ पे आप डिवाइडर इंसर्ट करके आप कोई भी चीज जो है वो आप कोई और टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं कि मिक्सअप ना हो और इजिली जो है वो व्यूअर कैन अंडरस्टैंड योर थिंग्स। प्लेस होल्डर, व्हाट इज दिस?
प्लेस होल्डर इंसर्ट करने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे कोई सी भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने ऊपर भी आपको यहाँ शो किया था कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लेस होल्डर्स थे यहाँ पे, तभी मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट की, आई हैव इंसर्टेड वीडियो, आई हैव इंसर्टेड पीडीएफ। सो यू कैन ऐड एनी प्लेस होल्डर एज वेल बाय योरसेल्फ। आप खुद से भी कोई भी प्लेस होल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कोई भी चीज जो है इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज हो चाहे वीडियो हो, तो ये तो हम प्रीवियसली डिस्कस करके आ चुके हैं। देन यू हैव अ यूट्यूब ऑप्शन एज वेल। आप यहाँ पे कोई भी यूट्यूब वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक आप जो है चाहें तो, जैसे अभी हमने ऊपर जो है वो एक वीडियो डिस्कस की थी, आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वीडियो इंसर्ट हो चुकी है और इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आप इसको जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप इसको इजीली जो है जिस भी साइज में यू हैव टू इंसर्ट, यू कैन इंसर्ट अ वीडियो एज वेल इन योर पोर्टफोलियोज। उसके अलावा आपका ऑप्शन है कैलेंडर्स का। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कैलेंडर। लाइक सी, जैसे हमने अभी ऊपर एक कैलेंडर इंसर्ट किया था, यू कैन इंसर्ट द कैलेंडर एज वेल इन योर पोर्टफोलियोज। आप यहाँ पे कैलेंडर अपनी मर्जी से भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप कैलेंडर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट अ मैप एज वेल, यू कैन इंसर्ट एनी डॉक्यूमेंट एज वेल, you can insert any slide, Google, like you can say PowerPoint presentation or slide, you can add it here. You can add any Google sheet or Excel sheet here. You can add any forms here. So यहाँ पे ये सब चीजें जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हम ये सब चीजें जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियोज पे। कोई फॉर्म, कोई भी शीट, कोई भी presentation, कोई भी document, these all are the things that we can insert in our portfolios. अभी तक आपको you have any query, any question regarding these options, so you can easily ask in the chat box. Then we will move towards the pages. So यहाँ पे these were things you can insert it in your portfolios and you can create your portfolios with your creativity. आप कोई भी चीज यहाँ पे create कर सकते हैं. Then you have an option of pages. Now we're going to move towards the pages option, and this is the most important option. यहाँ पे आपको शो होगा होम पेज। तो जहाँ पे हमने काम किया है, the place we have created these all things you can see on my desktop. तो these all were the home page. अगर आपको कोई और भी जो है वो टैब्स इंसर्ट करने हैं, so see you have an option of plus here. Okay, so you have an option of plus here. You can add any menu section. You can add any tab, any of the tab you want to insert. Like मैं यहाँ पे आपको एक menu section insert कर दिखाता हूँ. Like if you have to add any menu section, like any other section, let's take it easy. अगर आपको कोई और section भी insert करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हमें name mention करना होगा. Like I am going to mention the name like new tab. यहाँ पे मैंने एक टर्म दिया है, एक नेम दिया है, न्यू टैब. एंड इफ आई एम गोइंग टू डन इट, सी with the home tab you will see a new tab option. And if I'm going to give new tab sub page, like अब मुझे इस new tab जो मैंने create किया, एक नया जो है मैंने section create किया है, so अब ये है क्या? So I am going to add the sub page as well. A title is sub page. यूजली यहाँ पे आप वो चीज मेंशन करेंगे जो कि आप उस टैब में वो चीज डिस्कस हो रही हो. तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ लाइक यहाँ पे डिटेल्स अबाउट द कोर्स. यहाँ पे मैंने जो एक सब पेज इंसर्ट कर लिया. डन. नाउ यू विल गोइंग टू सी दिस न्यू पेज. यहाँ पे आपको दो टैब नजर आ रहे होंगे. एक होम टैब जहाँ पे इतनी देर से हमने काम किया, यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड दीज ऑल थिंग्स, सो दिस वाज द होम टैब. नाउ यू हैव अनदर ऑप्शन न्यू टैब. इस पे आपको ये ऑप्शन आ रहा होगा डिटेल अबाउट द कोर्स. आप और भी जो है चीजें इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक आप एक और भी जो है वो सब पेज इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक योर एक्सपीरियंस आप कर लें, या आप जो है वो नाउ यू कैन गो टू सी डिटेल एक्सपीरियंस. सो इस तरह आप अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं एंड यू विल गोइंग टू मेक इट मोर एडवांस बाय एडिंग मोर थिंग्स. यहाँ पे आप और ज्यादा अपनी जो भी इनोवेशंस, जो भी आपने जो क्रिएटिव चीजें आपने की हैं, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ न्यू टैब, इन अ फॉर्म ऑफ न्यू सेक्शन. आपने होम सेक्शन में अपने बारे में बता दिया. नाउ यू विल गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ न्यू टैब
new section, and there you want to tell the viewer, the public about your experiences, and then you going to insert any new section, and then you want to insert, you will insert like इस तरह करते करते आप न्यू सेक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, और वहां पे आप अपने बारे में जो है और ज्यादा बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपनी हर चीज, या अगर आप किसी कंपनी या किसी ब्रांड या किसी कोर्स के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी चीज आप कोई और चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप वहां उसके हवाले से भी आप चीजें और ज्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टैब्स, इन अ फॉर्म ऑफ सेक्शंस। सो इस तरह होम टैब, न्यू टैब, और यहाँ पे आप और भी टैब्स जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। सी यू हैव एन ऑप्शन ऑफ न्यू लिंक। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सो यू गोइंग टू हैव एन ऑप्शन ऑफ न्यू लिंक। यहाँ पे आप कोई भी जो है वो लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे लिंक इंसर्ट होगा, सो आपको एक नया टैब, एक नया जो है आपको एक नया सेक्शन जो है वो मिलेगा, और वहां पे आपको जो लिंक है वो डिस्प्ले होगा। सो इस तरह आप यहाँ पे लिंक भी इंसर्ट कर सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ फुल पेज एम्बेडेड। ये यूजली जो है वो प्रोग्रामिंग के अंडर आता है, पर मैं फिर भी यहाँ पे आपको एक हेडिंग सी बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करना है अपने कोर्स के हवाले से, मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे मैं टाइटल दूंगा रजिस्ट्रेशन का। Now you're going to see this registration option. You will have to add an embedded, or you will add any drive option. Usually कुछ लोगों ने, कुछ participants ने ऐसे options देखे होंगे। Usually जो है websites पे इस तरह के options आते हैं कि वहां पे आपको अपनी चीज insert करनी होती है। कभी भी आपको सॉफ्टवेयर ऐड कर रहे होते हैं, तो 100% नॉर्मली कहीं ना कहीं ऐसी चीज आती है। मुझसे पर्सनली बहुत दफा इस तरह की चीजें आई हैं, मगर ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, एंड यू हैव टू ऐड एन एम्बेडेड, लाइक यहाँ पे अपना URL इंसर्ट करें या अपना कोई एम्बेडेड कोड इंसर्ट करें। सो दिस वाज नाउ रिलेटेड विद प्रोग्रामिंग, सो दिस वाज नॉट आवर कोर्स टुडे। यहाँ पे आप नॉर्मली URL इंसर्ट कर सकते हैं, और आप उस URL को इंसर्ट करने के बाद आप जो भी आपने इंसर्ट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ YouTube वीडियो। इफ यू हैव इंसर्ट अ लिंक ऑफ अ YouTube वीडियो, सो योर वीडियो विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। यहाँ से आप अपनी वीडियो भी जो है वो ओपन कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा अगर आपको कोई ड्राइव से कोई चीज ऐड करनी है, तो ऐड थिंग्स फ्रॉम योर ड्राइव, सो यू कैन ऐड एनी थिंग फ्रॉम योर ड्राइव। लाइक मैं यहाँ से PDF एग्जांपल ले लेता हूँ। You can add any of the PDF or any of the document here. See, you have now added your PDF. अच्छा, नॉर्मली ये होता है, इसमें एक डिफरेंस ये है कि हमने जो होम टैब पे जो काम किया था, वहां जो PDF हमने इंसर्ट की थी, दैट वाज ओनली एज अ लोकेटिंग पर्पस। वो सिर्फ एक तरह से डिस्प्ले हो रही थी, एंड इफ यू वांट टू ओपन इट, अगर आपको वो ओपन करनी है, सो इट विल ओपन ऑन अ न्यू टैब। मगर यहाँ पर जो हमने जो यहाँ पे जो है एक नया हमने जो सेक्शन बनाया है, इसके अंदर अगर आप वो चीज इंसर्ट करेंगे, सो इट विल गोइंग टू बी डिस्प्ले ओवर ऑन योर स्क्रीन। सो उसके लिए आपको किसी और टैब खोलने की जरूरत नहीं है। इट वाज ऑटोमेटिकली डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, because this is a very important thing which I'm telling you. Like you can add any of the document or any of the thing you have made, so आप उसको यहाँ पे create कर सकते हैं। So उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, लाइक ये सब चीजें हो गई हैं। लाइक आपके पास आप न्यू मेन्यू सेक्शन ऐड कर सकते हैं, आप न्यू लिंक, आप किसी भी अपने साइट का लिंक मेंशन कर सकते हैं। यू कैन ऐड एनी ऑफ सेक्शन यू वांट टू ऐड। सो यहाँ पे सब चीजें आप इस तरह वन बाय वन यू विल गोइंग टू ऐड मोर सेक्शंस हियर। अच्छा, अब बढ़ते हैं थीम्स की तरफ। Now we're going to move towards our themes, and we have 4 minutes left to end this session. So यहाँ पे जो है themes हैं, you will have a different themes here. Like यहाँ पर बहुत सारी themes you can see, like you can add any of the theme you want to add. Like आप यहाँ पे कोई custom theme भी add कर सकते हैं, like कोई भी theme या कोई भी image आपको insert करनी है, so यहाँ पे आप कोई भी image भी insert कर सकते हैं। Like first of all I have to give it a name tag, एक example के तौर पे name ले लेते हैं, and then you can add a logo as well. आप यहाँ पे कोई logo भी insert कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे कोई बैनर इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है, तो आप यहाँ पे किसी भी बैनर इमेज की भी इमेज ले सकते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट करेंगे, then you have a preset colors. Like यहाँ बहुत सारे color combinations, you can see different color combinations here. You can use any of the color combination you want to insert from here, so you can insert. Let's take an example of this color. Okay, then you will have an option of the title and heading font, and then body font. आपको कौन सा font देना है, so you can select any of the font you want to add, like this. Then you have an option of body font, body text मेरे को अगर मुझे इसका देना है, so I can choose any other font I want to add for my body. Okay, then you can create a theme. See how this theme was created.
अब आपको यहाँ पे एक न्यू थीम शो हो रही होगी, कुछ चेंजेस आपको महसूस होंगे। लाइक फर्स्ट इज मेरा जो आपको शो होगा होम टैब और न्यू टैब, उसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। पूरा का पूरा जो पूरा क्या 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 कहते हैं, पूरा जो है मेरा पोर्टफोलियो, उसका जो है वो टेक्स्ट चेंज हो चुका है। सी कलर्स भी मैंने सिलेक्ट किए थे, कलर्स मैंने जो सिलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मेरे देखें फेसबुक पेज पहले ब्लू था, ब्लैक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे वो थीम अफेक्ट करा है, और मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो है इट वाज चेंज अकॉर्डिंग टू माय थीम व्हिच आई हैव सेटेड। इसके अलावा आप यहाँ पे रैंडम कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर हैं। बैकग्राउंड आप किसी भी जो है वो कलर का, यू कैन गिव एनी ऑफ द कलर बैकग्राउंड यू वांट टू गिव, लाइक ब्लू, if I select this blue color, so you can add this as well. Title और heading के लिए if I will going to select, let's select a black color, और body के लिए especially I'm going to select this ग्रीन कलर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो इस तरह जो है अब आपको मोर ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पे टाइटल के लिए मैंने जो है ब्लू ले लेता हूँ, हेडिंग्स के लिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट ग्रीन, सब हेडिंग के लिए आई एम गोइंग टू सिलेक्ट रेड। सो यहाँ पे डिफरेंट ऐसी कलर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए, एंड देन यू विल गोइंग टू ऐड टू योर होम स्क्रीन, टू योर पेज। ओके सी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे रेड से जो है वो कलर चेंज हो चुका है। सब हेडिंग, सी आई हैव सेलेक्टेड द रेड सब हेडिंग, सो नाउ it will be seen in a red form. प्रीव्यू करते हैं इसका, सी सब हेडिंग वाज चेंज्ड। हेडिंग का प्रीव्यू करें, so this is a heading, and टाइटल का प्रीव्यू करें तो टाइटल वाज चेंज ब्लू कलर। so यहाँ पे जो कलर्स मैंने सेलेक्ट किए थे इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट कलर्स। उसके अलावा ऑप्शन है टेक्स्ट का। आपके पास टेक्स्ट है, जैसे जॉर्जिया मैंने सेलेक्ट किया था, आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज यू कैन एडजस्ट, यू कैन ऐड अ बिग साइज एज वेल। सी द fonts are increasing because I'm adding more, I'm increasing the font size, and you can make it short or small as well. You can add bold or italic colors as well. You can add the alignments as well, आप कोई भी alignments according भी आप select कर सकते हैं। आपके पास लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन है, आप यू कैन ऐड एनी ऑफ द लाइन स्पेसिंग यू वांट टू ऐड, लाइक 2 सेंटीमीटर, 1.5, 1.25, 1.15, 1 मीटर, एनी ऑफ द लाइन स्पेसिंग यू वांट टू इंसर्ट, सो आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑप्शन है इमेजेस का। अच्छा इमेजेस क्या है, इफ यू वांट टू ऐड एनी इमेज, लाइक हेडर पे अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, अगर आपने जो है वो अब इमेज का आप यहाँ पे जो है वो अपना इसकी जो है लोकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन इफ यू वांट टू ऐड, सेलेक्ट एनी पोजीशन लाइक अपर लोअर, सो आप यहाँ पे पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें एक्चुअली वो है कि अगर आपको खुद से कोई डिजाइन क्रिएट करना है, इफ यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन द थीम्स व्हिच वाज ऑलरेडी। Okay, so we are talking about the themes, like how we can make our portfolio more attractive for the participants, like they can see, the viewers can make and understand more easily like our portfolio. So we are talking about the themes, and I'm going to telling you like how you can add the image, like how you can make your text with another font, colored subheadings, titles. So these were the styles, so these were the things that we're talking about, and we are on the images. Like आप जो है normally you can add any image as a header form, and you can add any logo as well. You can adjust their areas, their positions. Like अभी जो है you can say that I have inserted this Technolitrate as a in a header form, and you can see that I have add that logo. So यहाँ पे जो है logo और header जो मैंने insert किया हुआ है in my portfolio. So we have an option of navigation as well. So what is this navigation? Actually the backgrounds that we have to choose it, like यहाँ पे different colors की variety है, you can choose any of the color as in a background form. You can choose any like black color if I choose, so but black's already chosen, so I'm going to choose another colors to make you understand. Like I have to choose a blue color, and if I'm going to see, if I am going to remove that transparent option, so my header was now changed into a blue color. So अब आपको यहाँ पे जो है different आपको जितने भी sections जो मैंने insert किए हैं, see this section was now turned into blue, this section was now turned into blue. So आप यहाँ पे normally navigation के through जितने भी text boxes उनके colors change कर सकते हैं। Another thing is that you can have a option of bold as well. आप जो है उन कलर को बोल्ड भी कर सकते हैं। You can have foreground colors as well. आप जो है वो टॉप नेविगेशन का जो कलर भी बदल सकते हैं। लाइक मैंने अभी जो है वो ब्लू सेलेक्ट किया है, so I'm going to select another color like green. Let's take an example of green. So now the top navigation color was now changed into a green form, and the side navigation I'm going to choose in like shading. I'm going to choose a shaded form color
and I'm going to choose that light blue. So इस तरह जो है you can choose any of the color you can want to insert and make your own theme. Normally इससे ये होता है कि अगर आपको जो है वो customized जो है वो themes नहीं चाहिए, so you can make your own themes as well. So यहाँ पे बहुत सारी variety है. You can change the colors, you can change the font sizes, you can change the font styles, you can change any of the thing you want to change. Like you can change the navigation of the background as well. So it will going to be ends on the components. Like what are the components? So components are normally like styles. Like आपको कौन सा जो style choose करना है for your portfolio, so you can easily choose any other style you want to add. Like if I want this style too, so I'm going to customize it with a filled button. Like कौन सा जो है वो color I want to insert it in all the uh, background. So I want this green color, and if I'm going to see a preview, so यहाँ पे आपको preview show हो रहा होगा. Like see, uh, you can see that it's the green color was inserted in the example area. यहाँ पे आपको example जो है form show हो रहा होगा. So यहाँ पे जो है वो green color insert हो चुका है. If I want to insert a color outline button, so I will going to insert, let's take an example of orange color. Let's take an example, and now the example, this tab, this button was now to change into a orange outline. Okay. Another thing is that you have an option of text button. अब आप उसका जो है वो button का text भी you can easily change it by you can change it. Like आप जो है यहाँ पे कोई सा भी you can choose any color and you can change that button as well. So यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा themes और styles की वैरायटी है, बहुत सारे एक एक छोटी छोटी चीज भी you can change it in your portfolio. And this divider as well, divider I have inserted the divider. See, this was a divider which I have inserted previously. So आप इस divider का भी color आप easily उसको change कर सकते हैं. See, this divider was changed into a blue color. So ये सब जितनी भी चीजें हैं वो जब हम edit कर रहे हैं, so if we will going to see in a viewer form, अगर इसको हम viewer form में देखें तो these all editing would be shown us in a viewer form. अभी जो हम creator हैं, तो जब हम इसे create कर रहे हैं, so हमें ये सब चीजें shown नहीं हो रही हैं. So जब हम इसको viewer form में देखेंगे, so we're going to see that this divider we're going to change into a blue color, this button we're going to change into a yellow color, text would change into a blue color. So these some things we're going to change in the viewer form, and we're going to see in a viewer area. So now we're going to see about the line weight. We have applied the line weight just 2%. If I want this line to be thick, sorry, I want this line to be thick, so I can select any color like 3. I have said, and if I'm going to see in a preview, so now the line would be in a third form, like it's like a thick form. So ये जो है जब preview करेंगे इसको, तो now we will see this line would be in a thick form. So इस तरह हमारे पास link का भी है. अगर कोई हम link insert करते हैं, if we insert any link in our portfolio, so we can, normally the links are in a blue color, and if we have to change their color in a blue to any other color, so you can change that as well. आप यहाँ पे कोई सा भी color use कर सकते हैं for making your link to be in that color. I want my link to be in a red color, so वो जो है वो color link जो है वो usually जो है वो red color में display होगा. At last we have an image cursor. So आप जो है image को, अगर आप जैसे देखिए ये image जो है, तो यहाँ पे image के dots हैं, तो ये dots black हैं. So इस dots तक को जो है you can change with your own color, purple, red or any other color. I have set this pinkish color. So इस तरह जो है आप एक dot से लेके एक पूरी picture तक आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो change कर सकते हैं, and you can make your own theme. So इस तरह आप अपना portfolio जो है वो design कर सकते हैं और उसको आप अपनी तरह तरह से थीम जो है वो दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको खुद जो है वो कस्टमाइज थीम नहीं चाहिए, यू वांट योर थीम टू बी क्रिएटेड बाय द गूगल, तो सी देयर आर मैनी थीम्स दैट वाज created by the Google, so you can choose any of the theme you want to select. So if I want this theme, so I'm going to choose it, and it will going to give me 4 colors. Like इस theme से related हमारे पास 4 colors हैं, so we can choose any of the color, like green or this maroon. And if I want these color to be beyond this, so अगर मुझे और colors चाहिए, तो ये देखिए मैं अपने I can create any own color as well. कोई सा भी मैं अपना own color भी create कर सकता हूँ. So इस तरह ये होगा कि जो है वो theme जो है वो हमारी उस color की like सी यहाँ red हो चुका है, हमारी जो outline जो है वो black और blue shade की है. So ये सब चीजें जो है वो हमारे इस font style का जो है एक part है. You can also add your font style in a classic form and a light or a heavy form. like यहाँ पे classic एक तरह से ये font है, एक heavy यानी कि bolded form है, और एक light यानी कि unbolded form है. तो यहाँ पे अगर मैं classic form select करूँ,
सो जो टेक्स्ट है मेरा वो क्लासिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एंड यू वुड सी दैट सी माय होम टैब एंड न्यू टैब, दीज बोथ आर इन अ क्लासिक फॉर्म। अगर इसको हैवी फॉर्म में अगर मैं सेलेक्ट करूं, सो दिस विल गोइंग टू चेंज टू अ हैवी फॉर्म। सी द टेक्नोलाइट्रेट वाज चेंज इनटू अ हैवी फॉर्म। सो यहाँ पे लाइट फॉर्म है, सो यहाँ सी नाउ दिस ऑल वाज चेंज इनटू अ लाइट फॉर्म। सो इस तरह जो है हम फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, एंड यू विल गोइंग टू क्रिएट दिस थीम ऑफ योर गूगल स्लाइड। सो इस तरह जो है आप अपना जो है गूगल जो है साइट, अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो यू कैन क्रिएट बाय योरसेल्फ by adding anything you want to add in your portfolio, any of your work or any of your project which you have made, or any of your social platforms। अगर आपने कोई फेसबुक पेज क्रिएट किया है या कोई आपका यूट्यूब चैनल, तो आप उसका easily you can locate that project in your electronic portfolio। So this was very much beneficial for you all. So try to create this and try to work on this portfolio so that you're going to enhance your more skills and more creativity in this application। हमने अपने कोर्स में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के सेशन इसलिए रखे थे because we're going to make you aware not only the topics which we're going to discuss in the course, but we're going to make you aware of different type of application, different type of softwares that will going to be help in your future। हमने अभी तक जो है ट्रांस नोट एक बहुत ही इफेक्टिव एप्लीकेशन है नोट्स क्रिएट करने की, गूगल की, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। ये गूगल साइट भी है, इससे पहले गूगल फॉर्म डिस्कस किया था। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस दैट यू विल बी वेल अवेयर इन द फ्यूचर, सो दैट यू विल गोइंग टू यूज इट easily and you don't feel any of the problem in these applications। okay, इसके अलावा जो है आखिरी में जो है कुछ छोटी जो है चीजें, छोटी मोटी चीजें, like you can see that you can make a copy or you have some options like आप इसका एक टूर भी ले सकते हैं। Let's take a tour of it। हम इसका एक टूर लेके देखते हैं, that let's see how was it like। okay, सी अच्छा, यहाँ पे जो है इस टूर के अंदर आपको जो है वो इजिली जो है आपको वन बाय वन एक से लेके मतलब एक चीज वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और टूर एक तरह से आप समझेंगे ट्यूटोरियल ही एक तरह से आप लोगों के लिए। एंड यू गोइंग टू सी दैट लाइक यू विल गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय दिस एप्लीकेशन। आपको कोई भी इशू नहीं होगा, वो आपको टूर देंगे, वो आपको चीज समझाएंगे। द थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू, द ऑटोमेटिकली सिमिलर थिंग्स विल बी टोल्ड बाय from this tour, and if you want this tour to be skipped, so you can skip this tour। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है you can share it with your friends or the person you want to share। so आप उसको easily यहाँ से जो है उसको आप share भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे, आप यहाँ से इसको करेंगे एनीवन विद दिस लिंक एंड यू टू पब्लिश। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, इफ यू वांट योर पोर्टफोलियो टू बी पब्लिश्ड ऑन योर इंटरनेट। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये साइट है एक तरह से वेबसाइट की सूरत में या एक तरह से कोई ब्लॉग की सूरत में इंटरनेट पे जो है वो पब्लिश हो जाए, सो यू कैन पब्लिश फ्रॉम हेयर, यू कैन पब्लिश योर साइट फ्रॉम हेयर। आप यहाँ पे जो है इस साइट को इजीली इंटरनेट के ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं, एंड द पर्सन विल गोइंग टू इजीली लोकेट यू थ्रू दिस portfolio from the internet। if you don't, so you're going to make it a restricted and you will not going to be published on your इंटरनेट। अगर आप नहीं चाहते तो यू कैन नॉट पब्लिश योर पोर्टफोलियो टू द इंटरनेट। अगर आप नहीं चाहते तो ना करें, इट्स टोटली ऑप्शनल। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इस लिंक के थ्रू यू कैन सेंड इट टू एनीवन फ्रॉम दिस लिंक। और या फिर आप चाहें तो इसके अंदर आप किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यू विल गो टू ऐड एनी ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस, लाइक आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी इंसर्ट करें एंड यू विल गो टू ऐड दैट पीपल टू योर portfolio। so he will going to easily open it as an owner or as an editor। वो आपका जो है वो पोर्टफोलियो ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा देन यू कैन डन इट। उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, यू गोइंग टू सी अ प्रीव्यू ऑफ इट। अगर इसको हम प्रीव्यू शो करें, सो आई होप दैट दिस प्रीव्यू वुड बी सीन बाय यू ऑल। ओके, तो ये एक तरह से प्रीव्यू है। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे तो आपको अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका प्रीव्यू जो है वो शोन होता रहेगा। सी द पोर्टफोलियो, जब स्क्रॉलिंग डाउन तो यहाँ पे आपको पूरा प्रीव्यू शोन हो रहा है। आप देखिए यहाँ न्यू टैब का भी ऑप्शन है, यू कैन चेंज इट, स्विच टू अ न्यू टैब एज वेल। सी so this was actually a new tab and you want to select a registration option, तो यहाँ पे आप registration option के पास भी जा सकते हैं। so this how you will going to create your portfolio and you will going to see it as well through the preview option। and if you want to cut it, so you go to back to your screen। I hope this preview was visible to you all, so that I'm going to end this site। okay,
Then we have, at last we have an option of undo redo. So these all things you will know. Okay, so this how the Google site was ended, and these were the main things that we have to actually discuss in this Google site. And I hope that you're going to get more things from this application. If you have any query, so you can ask in the chat box. Then I'm going to uh, turn towards the Excel, because we have 10 to 15 minutes we have. So हम एक short सा recap कर लेते हैं Excel का, because we have to cover our things very rapidly, because इसके बाद graphic designing, programming, these were the largest topics, because we have to cover it. So किसी बात कोई question है, so you can ask in the chat box if you have any question, or if you have understood, so you can say in the chat box that you have understood, so that we can mark you as a present, or your participation would be marked. Kindly answer in the chat box, please. We have participants. Kindly, any one of you can speak up in the chat box, so that we can know that you have understood or you don't have any question. Or if you have, so you can ask here. I'm going to share this with you through the WhatsApp group, and I'm going to check the mobile application as well. Like अगर Google Site की कोई mobile application है, so I'm going to see there as well. And if it is on mobile phone, so it was very beneficial for you all. Okay, so I'm going to switching towards the Google. I'm going to switch towards the Microsoft Excel. So I'm going to share my screen again to the Microsoft Excel. Okay, so now I'm going to switch towards the Microsoft Excel, and you will see the Microsoft Excel, like what is it? Introduction, some introduction I'm going to share you with you all. Okay, so I'm sharing my screen again. Okay, so this is actually the preface of Microsoft PowerPoint. Sorry, Microsoft Excel. This was the preface of Microsoft Excel. Here you can make any report, any table, any checklist, anything you want to make, you can make from here. You can see that it's consisted of many sheets, and ये जो है बहुत सारी sheets हैं. You can create the work on this preface. Many of the people are well aware of the Microsoft PowerPoint, but there are many people who didn't work on Microsoft PowerPoint, because normally ये होता है कि this application usually work in the professional areas, or if you are linked with any professional institute or any company, so those people used to work on this Excel. But normally जो है वो assignments वगैरह के लिए ये जो है वो application use नहीं होती, और एक student के लिए बहुत rare है Microsoft Excel को use करना. But I'm going to tell you about this thing. Like we have some time, so we're going to just discuss about the home tab, like what is this basics of Microsoft Excel. And inshallah in upcoming week we're going to discuss more about Excel, and then we will switch towards graphic designing and all that. Okay, so you have same option as like in Microsoft Word, as like in Microsoft PowerPoint. You have an option of bold, italic, underline, change font, or change numbers, or you have an option of this theme colors. You have an option of this text colors. So ये सब तो चीजें तो जो नॉर्मल है, जो हर आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट के. इसके अलावा you have an option of alignment. You can change the alignments of your text easily. You have an option of this. Okay, now I'm going to format this this cell, and I'm going to making this worksheet as a formatted. अब आपको यहाँ पे जो है मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ क्या है क्या चीज. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ सेल. लाइक एक सेल हम इंसर्ट करेंगे. These were some structure of the cells. Like यहाँ पे जो है आपको full colored cell मिलेंगे. यहाँ पे ये सेल स्टाइल्स हैं, और यहाँ पे जो है आपको ग्रिड फॉर्म में जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है मिलेंगे. वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सेल, एंड नाउ माय आई हैव क्रिएटेड अ टेबल. अब यहाँ पे जो है एक टेबल हमने क्रिएट कर लिया. यू कैन एडजस्ट द अलाइनमेंट्स. आप इसको आप हर एक टैब को आप लार्जर फॉन्ट में भी ला सकते हैं, आप स्मॉल फॉन्ट में भी ला सकते हैं. these were actually the columns. These were actually the columns which I have made, and these were the horizontal ones are the rows. And all the game, all the things, all the process was totally depends on cell and rows and columns. So सब कुछ जो है यहाँ पे rows और columns पे depend करता है. आपको जो भी आप create करेंगे यहाँ पे वो rows और columns से affect करता है, relate करना है. सही है. Now you can make your rows more मतलब you can make your rows more breadth as well. आप उनको ज़्यादा increase भी कर सकते हैं. You can make your rows decrease as well.
एंड मेक योर रॉ शॉर्ट लार्ज एज वेल। जितने आपका टेक्स्ट का साइज होता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने रॉ और कॉलम्स को। इसके अलावा जो है सेल स्टाइल्स तो हमने आपको बता ही दिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल स्टाइल्स हैं। आप यहाँ से कोई सा भी जो है वो सेल स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। सी यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल स्टाइल्स जो है आपको कलर के अंदर मिल जाएंगे। यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हेडिंग्स एज वेल, लाइक सी यहाँ पे अगर आपको हेडिंग इंसर्ट करनी है सो आप यहाँ पे नॉर्मली हेडिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू इंसर्ट वन हेडिंग हियर। सी आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस हेडिंग। यहाँ पे अब आपको एक तरह से एक लाइन से यहाँ पे शो हो रहा होगा दिस वाज एक्चुअली दी हेडिंग। यहाँ पे आपको आप यहाँ पे कोई भी हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। सी यहाँ पे मैंने एक हेडिंग इंसर्ट करते हैं टेक्नोलाइट्रेट। तो यहाँ पे हेडिंग इंसर्ट हो गई है। इसको मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको ड्रैग करके कहीं भी बीच सेंटर में भी लेके जा सकता हूँ, और आई कैन मेक इट मोर लाइक मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूँ। आई मेक इट लार्ज एज वेल, आई कैन मेक इट स्मॉल एज वेल। सो ये सब चीज़ें तो ईजिली हैं, आप लोग इसको इजीली आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है आपके पास ये है न्यू सेल स्टाइल्स के ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है वो स्टाइल्स अपना खुद का स्टाइल भी बना सकते हैं, बट this we're going to discuss in the insert tab and in the next session। तो अभी जो है हम सबसे बेसिक चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल। अगर आप एक सेल को आप जो है वो सिलेक्ट करते हैं, इफ यू वांट योर सेल टू बी मर्ज्ड, सो सी अब जो है वो पूरा का पूरा सेल जो है वो रिमूव हो चुका है एंड यू आर गोइंग टू हैव वन सेल। अब ये एक पूरा सेल है। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल्स से ग्रिड बना हुआ है, पर यहाँ पे जब मैंने सेलेक्ट किया है मर्ज सेल का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको एक लार्ज सेल मिल चुका है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी चीज इंसर्ट करनी है सब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे इजिली। सही है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि मर्ज अक्रॉस। इसको मर्ज अक्रॉस का मतलब है, एक सेकंड यहाँ पे आपको चेंज चेंज यहाँ पे होगा। यहाँ पे इसके मर्ज अक्रॉस पे यूजुअली ये होता है कि यू आर गोइंग टू सी द टेक्स्ट, लाइक अब आपको जो है एक पूरा ग्रिड आपको लोकेट नहीं होगा। यू आर गोइंग टू हैव अ रॉस, यू आर गोइंग टू हैव अ कॉलम, बट दिस कॉलम विल डिसअपीयर। यहाँ पे जो है वो मर्ज जो सेल के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लार्ज सेल था, मगर जब हमने इसको मर्ज अक्रॉस इसको जब हमने सिलेक्ट किया, सो नाउ यू विल हैव अ लाइंस एंड यू विल हैव अ रॉस एंड कॉलम, बट इट वुड बी नॉट सीइंग। लाइक अब यहाँ पे मैं कुछ भी अगर चीज इंसर्ट करता हूँ, लाइक कुछ भी यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, सी इट वाज इंसर्टिंग इन अ फॉर्म ऑफ लाइंस, एक के नीचे एक। तो ये एक तरह से आपको यहाँ पे लाइंस ही शो हो रही है यहाँ पे। इसको आप एक तरह से इसको आप ग्रिड ही समझें, बट दिस वाज अ लार्ज ग्रिड आपको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे ऑप्शन है मर्ज सेल इजिली। ये मर्ज सेल का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल सिलेक्टेड एंड देन यू हैव ऑप्शन मर्ज सेल। ओके, the section can contain multiple raw values, merging into one cell will keep the upper left। ओके, अच्छा यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप जो है आप मैंने हर रॉ में मतलब हर लाइन की रॉ में मैंने डेटा इंसर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सेल मर्ज करेंगे सो दैट वुड बी डिसअपीयर। सो वही हुआ, ऊपर का टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर होगा बिकॉज आई हैव मर्ज्ड द सेल टुवर्ड्स द ग्रिड। उसके अलावा यहाँ पे अनमर्ज सेल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अनमर्ज कर सकते हैं। नाउ इट विल टोटली बैक टू दी ओल्डर स्पेस। यहाँ देखिए वापस से जो है हमें जो है हमारे सेल्स मिल चुके हैं, और इस तरह आप इसको आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। आप उस सेल को जो है इजीली उस सेल को अक्रॉस और अनमर्ज्ड, और आप उसको सेंटर में मर्ज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वैरायटीज है। यू कैन ऐड एनी ऑफ द सेल टुवर्ड्स योर ग्रिड। उसके अलावा ऑप्शन है, ये जो है वो बहुत वास्ट ऑप्शन है। ये लाइक यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, तो ये सब चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वेरी पॉपुलर फॉर दीज टाइप ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा जो है फेमस है, और यूजली जो है लोग यहाँ पे जो भी चीज क्रिएट करते हैं चेकलिस्ट वगैरह या जो भी डेटा जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाता है वो यूजली जो है मैथमेटिकल से रिलेट करता है। सो वी गोइंग टू डू दैट एज वेल, बट यहाँ पे अभी कुछ बेसिक चीजें जो है मैंने आपको डिस्कस करनी थी। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक यहाँ पे जो है आपके पास ये ऑप्शन है, यहाँ पे जो है वो आपके ऑप्शन है कि फॉर्मेट का। तो यहाँ पे आप अपनी रॉ हाइट और कॉलम वेट, तो ये सब चीजें जो है आप इजीली उसको अपने तरीके से जो है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इसको ये एक तरह से आपके रॉज और कॉलम्स पे डिपेंड करता है, आप उसमें से कोई सा भी जो है यूज कर सकते हैं। रीनेम शीट आप कर सकते हैं, आप मूव और कॉपी शीट, तो ये सब तो इजिली सब चीजें जो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट दिस, सो वी आर ऑप्शन ऑफ दिस। लाइक यहाँ पे आप जो है टेक्स्ट को
in sub fonts के according you can manage, like you can write counter clockwise, you can write your text in a clockwise. आपको मेरे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि जो टेक्स्ट जो है, जो ए बी जो लेटर्स यहाँ मेंशन है, वो जिस जिस एंगल में यहाँ शोन है, तो उस एंगल में अपना टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हैं। हम अपना टेक्स्ट जो है रोटेट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, हम क्लॉक वाइज, काउंटर वाइज, जितने बहुत सारी वैरायटीज हैं, हम किसी भी फॉन्ट में अपना टेक्स्ट जो है मेंशन कर सकते हैं फॉर मेक आर रिपोर्ट मोर अट्रैक्टिव। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में ये बार ग्राफ, पाई चार्ट और ये सब चीजें जो है हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, दिस बैकग्राउंड, दीज ऑल थिंग्स। सो अभी जो है हमने सिर्फ होम टैब में वो भी छोटी छोटी चीजें डिस्कस की हैं, इसका भी मैं शॉर्ट रिकैप दूंगा अपने नेक्स्ट, अपना जो अपकमिंग सेशन जो होगा सैटरडे का, बिकॉज फ्राइडे वी हैव अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सेशन। सो सैटरडे को जो है अपकमिंग सेशन जो होगा, उसमें जो है वो हम इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे, इस सब चीजों के बारे में। और यू गोइंग टू गेट द रिकॉर्डिंग्स in the Google Drive as well and the YouTube as well. So I am going to end up the session. किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, या फिर आप कम से कम अंडरस्टूड या कोई भी इस तरह की जो है चीज मेंशन करें चैट बॉक्स में, दैट्स व्हाई सो दैट आई कैन मार्क यू प्रेजेंट एंड आई कैन मार्क योर पार्टिसिपेशन। ओके, participants kindly respond me through chat box or through your mic. You can open your mic and answer me. I'm waiting. Then I'm going to end the session, and we have only 6 minutes left for. Okay, we have one chat. Okay, Laiba Altaf have participated and she has said understood. Okay, we have Musaf as well. We have with us. We have different participants, like हमारे पास और भी different participants है. So if you will going to react, so that's why we're going to make you present. Okay, and as today's session was consisted of 2 hours, this was the largest and a special session which was made by you all, and we're going to assign you the task as well. We have one chat as well. Okay, Musaf has no doubts. Okay, now I'm going to end this session, and today, as you all know, today is Sunday, so you're going to get the home task for this whole weekend. तो अब आपको आज जो है assignment assign कर दिया जाएगा आप लोगों को, and you're going to complete it within the given time. And the participants who have not submitted the previous assignments, kindly submit it, because these all will going to be this all marks will going to be calculated in from will going to be get in a form of percentage from 100. सो एक परसेंटेज फॉर्म में आपके जो है वो सर्टिफिकेट से मेंशन होगी। योर ऑल द थिंग्स आर वेरी नेसेसरी, योर पार्टिसिपेशन, योर अटेंडेंस, योर home assignment, all the things are very very important for you all to stay in this course with attentive as an attentive participation. Okay, so I'm going to end this session. I hope you are going to have this session very productive. This is a 2 hour session. I know it's a very long session, so go relax, and the participants who have missed something, so you can check the recordings, we're going to upload you. Okay, so take care, Allah Hafiz, and kindly check the homework which we're going to assign in the Google Classroom today. Okay, so Allah Hafiz, students.